हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, नेम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ मीन्स अर्थ के कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जिसके बिना अर्थ अधूरी है। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि आपने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि ये अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर मनुष्य जीवित रहते हैं and human being can live there because the sustainable elements as land, water and these. So I mean that land, water, air, these types of substance are known as domains of earth. The surface of earth is a complex zone which meets by the three environment meet and for instance the solid portion of the earth on which we live is known as lithosphere. So land means lithosphere, gas means atmosphere and atmosphere के अंदर ऑक्सीजन होता है, मार्क आउट, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और भी बहुत सारी गैसेस पाई जाती है। So the water surface is known as hydrosphere. So the hydrosphere means the water. As you have listened that hydro dams has been made in China and all. And the biosphere is a narrow zone where we find land, water and air together which contains formal life. So biosphere का मतलब है धरती, अंबर, दरिया, समंदर, तारे, सितारे collective make a biosphere. So then we have the word origin. So let me scroll it. In the Greece language, ग्रीस के लैंग्वेज में लिथो का मतलब होता है स्टोन, एटमोस का मतलब होता है वेपर्स, हाइड्रोर का मतलब होता है वाटर एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो जो इन्हीं वर्ड से मिलकर बना है लिथो लैंड पोर्शन, एटमोस्फेयर मीन्स एयर एरिया एंड हाइड्रोस्फेयर हाइड्रो एरिया, बायोस्फेयर नैरो जोन टुगेदर, धरती समंदर वाला डायग्राम। Then we have lithosphere. The solid portion of the earth is known as lithosphere. So जो हमारी धरती का जो solid portion होता है उसे lithosphere कहते हैं। The compression, the rocks of the earth crust and the thin layer of soil that contains nutrients elements which sustains organisms. So इसका मतलब क्या है, जो पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है और उन मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जैसे आयरन पार्टिकल्स और इस टाइप से एंड सम ऑर्गेनिज्म एज अर्थवॉर्म, सो उस एरिया को बोला जाता है लिथोस्फीयर एंड देयर आर टू मेन सरफेस which comes in the part of lithosphere and the large landmass are known as continents. Large mass are known as continent as I show you in the map. So these, you can see these big portions color green, yellow and this purple. This area is known as our lithosphere. I mean lithosphere. This water area, oceans, blue color, it's known as hydrosphere. And the atmospheric layer is known as our atmosphere. So this is most in the chapter.
So, and the huge bodies are known as ocean basins. And ocean basin surface is also part of lithosphere. And look at the map to the point 1 are the Mars. Yeah, हमने ये देख लिया. The level of all the oceans of the world are connected with one another. जैसे हमने मैप में देखा हर ओशियन एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो हमने मैप देख लिया. The level of the sea water remains the same every time. जो सी वाटर का लेवल है वो हमेशा सेम रहता है. The elevation of land is measured from the level of the sea which is taken as zero. So ये zero यहाँ इसको कहा गया इस टाइप से. So second में हमारा मैप second page पे then the highest mountain peak. Mount Everest है highest mountain peak and that is about 8,848 kilometers. I mean meters. It means 8 kilometer and 848 meter, and in the point form may add point here. So about the sea level, the greatest depth of the greatest depth मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा गहराई क्या है? 11.022 kilometer. It means 11,022 kilometers means 11.022, and this is the of Kartana Trench in Pacific Ocean. So सबसे ज्यादा गहरा कौन सा है हमारा ओशियन? Pacific Ocean. So image depth is so much, how much in the higher point. So continents पर आते हैं अभी. तो जैसा हमने पहले देखा था लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स उसे उन्हें सबसे बड़े लैंडमास को कॉन्टिनेंट कहा जाता है. एंड यहाँ पे हमारे पास पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं. एंड एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. Let I show you the map also. So Australia, Asia, Europe, Africa, North America, South America, and Antarctica. These are known as the continents and the biggest landmass. And Australia, look at the map. Notice this: the greater part of the landmass in the northern hemisphere. So जो greatest नो वो है landmass का section, वो है हमारा north section में. So Asia. सबसे पहले यहाँ पर एशिया को लिया गया है. एंड एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड इट कवर्स अबाउट 1/3 पार्ट. मीन्स ये हमारी अर्थ है होल गोल एंड इसका इतना पूरा मतलब ये 3 पोर्शन आप इनको एशिया मान के चलो. ये सारा एशिया 1/3 पार्ट ऑफ अर्थ. So the continents. Okay, so the continent lying in the eastern hemisphere, the Tropic of Cancer passes through this continent. So northern hemisphere, I mean eastern hemisphere में जितने भी हमारे यहाँ पर है जो continent वो Tropic of Cancer से वो किए गए हैं कट आउट. मतलब उन पर Tropic of Cancer क्रॉस करते हैं. So the continent. So एक यहाँ पर हमारे पास एक नया चीज आई है सीखने के लिए. यूरोप एंड एशिया को दोनों को प्लस करके हमारे क्या बन रहा है? यूरेशिया. एंड ये इट कैन बी कम इन योर एग्जाम बाय द MCQ form. Okay. So Europe is much larger than Asia. So Europe is much larger. मतलब यूरोप है जो मच लार्जर मतलब एशिया जितना बड़ा है फिर एशिया के लगभग बड़ा है. And the continent lies in the west of Asia.
तो ये कॉन्टिनेंट है यूरोप, ये एशिया के लेफ्ट में है, and the Arctic Circle passes through it, and it is bound by water, from the third three sides. तो इस टाइप से है, तो इस साइड ये पोर्शन और ये पोर्शन, these three portions are covered with water, and this area is covered with land. So next is Africa. So Africa is the second largest continent after Asia. So Africa is second largest continent Asia में, and the equator of zero latitude run through the middle of the continent. So अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है हमारा जीरो इक्वेटर, I mean, and a large part of Africa lies in the northern hemisphere. It means मान लो ये है हमारा इक्वेटर, इसके ऊपर जो हिस्सा है वो होगा नॉर्दर्न, और जो नीचे होगा वो होगा साउथ. उसको ज्यादा हिस्सा इसका है नॉर्थ की तरफ और कम है साउथ की तरफ. And look at the figure and the contents, topic of cancer, equator, and so इसमें से टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, both three lines, imaginary lines, pass through our Africa. So next is our North America. Our North America is the third largest continent of the world, and it is linked with South Africa. So South Africa, North America, Africa, both are interrelated because both are Africas and they are connected with each other by isthmus. So, and of Panama, the continent lies completely in the north and the west hemisphere. Three oceans surrounded the continent. Can you name those oceans? So नॉर्थ अमेरिका जो है वो किन्हीं तीन ओशियन से है सराउंडेड. चलिए उनको पता करते हैं किस किस से है. So it is connected Arctic Ocean, Pacific Ocean, and Atlantic Ocean. So north and south both are connected each other as distinct ways. So on the next page we have red. In the next, साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका क्यों है वो? क्योंकि वो साउथ हेमिस्फीयर में ज्यादा होता है. एंड विच ऑफ द टू ओशियंस? तो हमने जैसे पता किया कि साउदर्न ओशियन एंड दी. सो द एंडेस, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन. सो एंडेस है वो वर्ल्ड का सबसे लंबा माउंटेन है, एंड रन थ्रू इट range length with the north to south, और उसकी जो वो है लंबाई वो नॉर्थ टू साउथ इस टाइप से है. एंड जो अमेज़न है, अमेज़न रिवर, आई मीन अमेज़न रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर जो हमारे साउथ अमेरिका के अंदर है. वैसे सबसे लार्जेस्ट वो ऐसे है, और वेस्ट साइड से डीपेस्ट रिवर में नाइल आती है शेप से. एंड द नेम स्ट्रेन. सो ये स्ट्रेन है इधर से. एक मिनट में जूम अप करती हूँ इसको. सो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा. इट इज नोन एज स्ट्रेन. ये हमारा स्ट्रेन है. एंड
and this is known as stumps. S thumb. So I hope you understand it well what is stumps and what is string. I hope it is explained properly to you, and I hope it is explained and you may get to know that what is it. Let me minimize it also. So Antarctica completely in the southern hemisphere. So जो Antarctica है वो completely सारा का सारा southern hemisphere में है, and the south pole lies almost at the center of this continent. So ये जो southern है, south pole है, वो सारा का सारा इस continent के बिल्कुल center में है, and at is it located in the south polar region. जिस तरीके से ये साउथ में है, तो इसके अंदर परमानेंटली बहुत मोटी लेयर होती है इसके ऊपर उसकी आइस की, एंड वहां पे कोई भी ह्यूमन नहीं रह सकता क्योंकि वहां पर इतनी ठंड है कि वहां पर 2 घंटे तक रहना भी मुश्किल है. एंड ऑल्सो देयर इंडिया ऑल्सो हैज रीच स्टेशन हियर, मगर इंडिया ने वहां पर अपना एक खुद का स्टेशन बना लिया है, नेम मैत्री एंड भारती. तो नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर. सो हमने लिथोस्फीयर पढ़ लिया है, सभी हम हाइड्रोस्फीयर पढ़ते हैं. हाइड्रोस्फीयर में हमारे वो भी आते हैं ओशियन. सो द अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट. आपने पक्का सुना ही होगा कि अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है, and it is covered 71% with water and 29% with land. Hydrosphere consists of water. Hydrosphere का मतलब पानी ही होता है, as running water in ocean, rivers and lake, ice in glacier, underground water and water vapor in atmosphere, all considered as hydrosphere. So it means चाहे वो ओशियन हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो वाटर वेपर हो, या फिर झील हो, या फिर पिघल के आती हुई बर्फ हो, या फिर जमीन के नीचे पाए जाने वाला पानी हो, वो सभी के सभी आते हैं हाइड्रोस्फीयर में. And more than 39% of the earth is found in the ocean. तो जो हमारा अर्थ है उसका 71% जो आई मीन 97% ऐसा एरिया में वो पाया जाता है. आई मीन इट इज salt is founded mostly 97% in the earth which human use. Largest property of the rest of water, it is formed of the ice sheet and the glaciers, or underground, and a very small percentage is available as fresh water for humans. So कुल 1-2% नहीं, मतलब बहुत कम पानी बचा है humans के लिए, as you have said, for the save water save life. But let me. So ये हमें यहाँ पे स्क्वायर दिखा रहे हैं इधर, आई मीन एरिया. क्यूब्स में यही बताया जाता है. So oceans. Oceans are the major part of hydrosphere. जो ओशियन होती हैं वो हाइड्रोस्फीयर का सबसे मेन पार्ट है, एंड दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, और वो सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से. द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग. जो ओशियन का वाटर होता है वो हमेशा मूविंग माने लहरता रहता है इस टाइप से. एंड वाटर वेव्स, the tide ocean current. The five major oceans are Pacific,
Atlantic Ocean, Indian Ocean, and Southern Ocean, Arctic Ocean. तो ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये मैंने बिल्कुल सीरीज वाइज बताए हैं. तो पैसिफिक ओशियन सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, एंड ये इसने 1/3 पार्ट हमारी अर्थ का कवर कर रखा है. एंड मरीना डेक्स द deepest part of the earth lies in the Pacific Ocean, and the Pacific Ocean is almost circular in shape, as Asia and Australia, North and South America surrounded it. Look at the map and find out locations and islands. The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. It is flanked by the North and the South America on the western side, and the Europe and the Africa on the eastern side. The coastline of Antarctic Ocean is highly indented. These irregular and independent coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of the view of commerce, it is the busiest ocean. The Indian Ocean is the only ocean named after a country, that is India, and the shape of the ocean is almost triangular, and it is the north. It is the north, and it is bordered by Asia, and the west by Africa, and it is east by Australia. The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. The Arctic Ocean is located within the Arctic Ocean and surrounded by the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. Eurasia, I have told you, Europe plus Asia is Eurasia. So we have just left out the topic atmosphere and biosphere. So we will made a part 2 for these two topics. So for the part 2, subscribe to our channel, and we make the videos for class 1 to 7 or 1 to 8 classes we make video. If you want any video on the such topics of the any class, you can comment us. We will make a special video for that. So bye bye. Subscribe to our channel.